जवाब नहीं दे रहे ना, बहस ना कीजिए। हमने सिर्फ एक मामूली सा सवाल पूछा है, कोई कागज है रिकॉर्ड पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे, ये तीसरी बात है बस। अब आपकी आवाज माइक पे आ जाइए ना। कोर्ट ही कंसर्न थे कि आपको तो अपने मेंबर्स को हमें पता था कि भाई अगर आपका मिसाल के तौर पे मेंबर ये बैठा हुआ है वोट डालने जाना चाहे जी, तो उसको पता तो होना चाहिए मैं कहाँ जाऊँ वोट डालने। तो हमने व्हाट्सएप के जरिए बता दिया था कंसर्न जो ड्यूटी लगाई गई थी असिस्टेंट कमिश्नर, ये आप किधर बात कर रहे हैं कि हमारा वहाँ लोग पहुँचे। नहीं, आपके हर सूबे में आपके मेंबर्स हैं ना नियाजी साहब, आपके हर सूबे में मेंबर्स हैं ना जी। आपका जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो तो हर जगह से सूबे से भी लोग आने थे ना जी। तो अगर आप पेशावर में एक अननोन प्लेस पे कोई इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिंध के लोगों को भी आना है वोट डालने, पंजाब के भी आना है और बलूचिस्तान से भी आना है। अगर आप चलाएंगे वीडियो मैसेज, नहीं मैं वीडियो से नहीं, आप वीडियो की बात नहीं ना, आप ये वीडियो की बातें छोड़ दें। तरीक़ेकार से हम जानना वीडियो पे चाहते हैं। केसेस नहीं चलाते हैं, हम केसेस जो हमारे सामने चीजें होती है उस पे चलाते हैं। ये आप लोग वीडियो बाहर जाके जितने मर्जी चला लें। उस दिन अगले दिन भी हमने यही बात की थी किसी केस में कि भाई ये हम आईनी अदालत है, कोई एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं कि कोई इतना आप तहरीरी तौर पे है या नहीं है, बस खत्म। जैसे इलेक्शन कमीशन से भी जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है ना उसमें वो आपसे पूछ भी रहे हैं और आप लिख नहीं रहे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए कि आप उनको इंटीमेट करें। पूरे पेशावर में वो सिक्योरिटी आपको देंगे या सिर्फ एक जगह पे देंगे? क्योंकि जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, केपीके पेशावर, कोई वेन्यू नहीं है। अब वो आपसे बार बार पूछ भी रहेंगे किधर सिक्योरिटी फराम करनी है। तो पूरा पेशावर में फिर कहीं भी इलेक्शन हो रहे होंगे, इसका मतलब है कि अगर कोई आपने जाके चमकनी में कर लिया, आप ना मानते हो सिक्योरिटी, ये आपका अपना वो है। मगर ये 30 नवंबर को आप कह रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दो, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एट द वेन्यू ऑन पोलिंग डे। चलिए खैर आप सोच लीजिए, बाद में बता दीजिएगा। जी जी भाई आप सिंपल जवाब कर रहे हो, आप हमसे पूछिए मौजूद है। हमने व्हाट्सएप कर दिया इलेक्शन कमीशन से। भाई ये बात आप 6 दफा कर चुके हैं। तहरीरी हम आपको दे देते हैं, इनको भी दिया हुआ, इनके पास मटीरियल है। हमने पेशावर कमिश्नर और पुलिस को कहा आपके अगर सिंगल पैनल आया, मेंबरशिप कितनी है आपकी? हमने उनको कहा मेंबरशिप कितनी है आपकी? 8,37,950। ये आपके रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड मेंबर है। 8 लाख डेटा भी मेरे पास है। 8 लाख को पता होना चाहिए था या नहीं कि इलेक्शन कहाँ होंगे और किस तारीख पे होंगे? हर जगह पता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा आप रहने दें, अभी अब हम आपसे एक छोटी बात पूछ रहे हैं, वो उसका सिर्फ जवाब दे देना, बहस आपकी सुनेंगे। यस, चले आगे बढ़ी मखदूम साहब। सिर्फ एक हमारा प्लीज ठहर जाइए ना। एक ऑब्जेक्शन आप प्लीज हम इनको सुन लें ना। इन्हीं पे ऑब्जेक्शन ना सर। भाई आप अगर हर वकील बहस करेगा तो हम किसी को नहीं सुन सकेंगे। आप सीनियर वकील बैठे हैं, कम से कम उनसे इजाजत तो ले लीजिए। सर मैं एक या उनकी कोई अहमियत नहीं है, आपके अपने वकील हैं। लॉर्डशिप एक आपकी जजमेंट मैं नहीं आपसे सुनूंगा। भाई आपके जब सीनियर वकील मौजूद हैं, ऐसे नहीं होता है। आप तो पार्टी है ना, आप आज हमारे सामने वकील की हैसियत से नहीं खड़े हैं। यू आर ए रिस्पोंडेंट, ठीक है। आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, सारा इल्जाम आपके सर पे है। तो आप आज वकील नहीं हैं। या तो आप कहें कि मैं अपनी वकालत कर रहा हूँ, वो अलग बात है। आपके वकील कौन है? आपके वकील कौन है? अहमद खान साहब है। तो फिर मौजूद हैं। ठीक, शुक्रिया। Well, what I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns ये तरीकेकार खत्म कर लेना इनका, आइन में जो इनके आइन में इंदराज है। शिक तरीकेकार क्या होता है? my lord, that was Federal Election Commission is provided. इनका जो आइन में जो आप पहले कुछ क्लॉजेस पढ़ रहे थे 5 पॉइंट, तो इसमें और कुछ तरीकेकार है या बस ये है? Sir, page 140 I was reading to your lordship. नॉमिनेशन फॉर्म का कोई तरीका है, मेंशन्ड है, कैसे होना चाहिए? It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, जी,
Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये relevant clauses बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं. अगर आप सर आगे देखें then on page 142 इसमें नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है, वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the नहीं मतलब वो जो अगर कोई क्लॉजेज है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम. जी सर. Sir, the organization is given, the sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and if your lordship sees the central organization is mentioned. सब से ये पूछ रहे हैं कि बता दें तरीके कार क्या. ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना सर. अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है, पेज 90 पे ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है Yes my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पर नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है. जी सर. अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023. Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ है इनके Yes, ma'am. सिग्नेचर से. Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा. Sir, it's not there in the constitution, it's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना. जी सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा. ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स. returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग अलग. 4 है सर. फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड. दे आर 10 इन नंबर. ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है आई विल नॉट कंटेस्ट. Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें. Withdrawal panels कहाँ है? हमारे पास नहीं ये, we don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया था. Announcement कहाँ है? जी. So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Secondly, you have taken my book here. My lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप. सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ. नहीं सर, ठीक है. अगर आप सर पैराग्राफ 2 onwards देख लें, and then the functions, and then ये paragraph. लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके? इस इलेक्शन से पहले ये कौन से इलेक्शन? PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए? 2017, ये डेट 19th June 2017. 19 जून 8 जून 2. तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए. What happened was, नहीं वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए. my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428.
ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, Relevant page 435, paragraph 424. 435. Paragraph? Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available record submitted by CEC that either the National Council dissolved had ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture it would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. each of these letters which are mentioned. Conclude क्या कर रहा है ऑर्डर? क्या रहा है? Okay, sir, इनको दोबारा टाइम दिया था. different dates were given to them and वो वाला पोर्शन पढ़ देना. my lord, I'll read the Concluding क्या कर रहे हैं? letter dated 10th. लीनियंट व्यू लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो eventually यही करते हैं. पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना जी सर. इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना. All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the election act. 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections. आगे पढ़िए. In case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced, in such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215, subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given your lordship the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 811 of 2023. दोबारा कहिए. 81171 of 2023. जी. This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Yeah, that's that page. 644. 644. Copy वालों को लेना करना. Okay, this is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ है. जी सर. ये पढ़िए ऑर्डर. Through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above.
declare, find and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law, declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and